Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until we get it right. Let's start our trial for today. Let's learn first how to do multiplication, learn if there are different methods to multiply fractions, and then move ahead to do the exercises on the fractions. But if you want to learn all the methods, then please like, share and subscribe to my channel Siddhi Academics. Let's start. Now let's start with multiplication of fractions. How do we multiply? How do we find product of fractions? If there are two fractions or even more than two fractions, what we do is we multiply the numerators and we multiply the denominators, and we write the product of multiplication of the numerators in the top and product of the denominators in the denominator place. Okay, that way we find the product of fractions. Now let's solve to understand it better. This example is 7 by 8 into 5 by 9. If you have a look here, there is no common factor between the numerator and the denominator numbers. So what we do, we simply multiply. 7 5s are 35 comes in the numerator. I'll write here 7 5s are 35 and 8 9s are 72. Okay, so this is the answer for this particular product of fractions. Okay, because there is nothing common between the numerator and denominators, we just don't simplify, we simply multiply, like we have written here, product of the numerators by product of the denominators. We do that. Now let's have a look here. 9 by 16, 24 by 25. Here if you see, there is common factor because 16 here is in the denominator and 24 is there in the numerator here. So what is common? We know 8 2s are 16 and 8 3s are 24. Common is 8. So we need to remove this common factor. We'll simplify. 8 2s are 16, 8 3s are 24. This is also called as cancellation or simplification by removing the common factors. So what remains in the numerator is 9 3s are 27. I'll write here. 9 3s are 27 and 25 into 2 is 50. This is the denominator. 27 by 50 is the answer. Now let's have a look here. 2 3 by 7. So here 7 2s are 14. 14 plus 3 is 17. So 17 by 7 is we change this mixed fraction into improper fraction. Now we'll multiply with 21. 7 1s are 7. 7 3s are 21. 7 is common here. So I cancelled it out. I simplified the numerator and denominator. So what remains is 7 into 3. 7 to 3 is 51. This is the answer. Now let's understand the use of off. You must have read about BODMAS earlier in your earlier classes. Now in this BODMAS there is a O. What does this O stand for? O stands for off. Now off is nothing but also multiplication. But this off carries more precedence than this M multiplication. M for multiplication. Okay, so wherever you see off, you first solve all the brackets. If there are any brackets before this in the question, you solve that and then you do the off. You solve the off expression. How? Let's see. Suppose A by B is a fraction, A by B of C. Then what you do? Instead of off, in the next step, you put multiplication, C into A by B. And then if there are common factors, you simplify from the numerator and denominator, and then you write the product of numerators by product of denominators. Okay, we'll see with this example. 11 by 25 of 120. Like I said, हम क्या करेंगे, ये ऑफ के जगह पर इंटू लिख देंगे, इंटू 120 कर देंगे. So 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So हो गया कितना, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 11 into 24 by 5. अब 24 into 11 कितना होगा, 264. 264 by 5. अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देंगे. 5 5s are 25, माइनस करेंगे यहाँ 14 आ जाएगा. 5 2s are 10. अगेन अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा. तो क्या हो गया, आंसर हो गया 52 4 by 5. दिस इज द आंसर. हाउ वी सॉल्व फॉर ऑफ. ऑफ के जगह पर इंटू साइन देके हम सिंपल जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस निकालते हैं, बस वही मेथड यूज करके वी फाइंड द आंसर. Okay, now let's understand different methods. If there are any other methods to find the product of fractions, let's learn the first method. See, yeah, the example given here is 4 into 4 1 by 2. Okay, जो 4 1 by 2 है, ये एक mixed fraction है. This is actually what? 4 plus 1 by 2. मतलब
एक पार्ट उसका एक होल नंबर है 4 और दूसरा पार्ट एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2. दैट इज हाउ 4 1/2 हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना लिया है 4.5. ये हो गया 4 1/2. ये जो सेक्शन है 4 1/2 को रिप्रेजेंट करता है. दैट इज गोइंग टू गेट मल्टीप्लाइड विथ 4. तो मैंने 4 इधर लिख लिया. ओके, मिक्स फ्रैक्शन को ऊपर लिख लिया और जो नंबर जो मल्टीप्लाई होना है उससे वो नीचे लिख लिया 4. 4 इंटू 4 1/2. तो यहाँ क्या करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे. पहले होल नंबर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 इंटू 4 इज 16. ना 4 इंटू 1/2. अब 4 इंटू 1/2 होगा कितना? 4 इंटू 1/2 अगर मैं करने जाऊंगी, मुझे सिंप्लीफाई करना होगा. ऊपर नीचे दोनों 2 है एज कॉमन फैक्टर. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4. ये हो गया 2 इंटू 1 2. तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1/2. यहाँ पर मुझे मिलेगा 2. अब मुझे मिला 16 और 2. इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी. 16 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 18. Now 18 will be the answer for multiplication if you multiply 4 with 4 1/2. अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2. 4 इंटू 4 1/2. पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को I will convert it into improper fraction. So 4 into 2 is 8. 8 plus numerator 1 is 9. So यहाँ पर मैंने लिख लिया 4 into 9/2. Now 4 into 9/2 में again यहाँ पर 2 है common न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो आई विल कैंसिल दैट कॉमन 2 आउट. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4. बच गया कितना? 2 इंटू 9. 2 इंटू 9 इज 18. तो वही से आंसर आया. मेथड अलग अलग है. सो वी लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विथ अ फ्रैक्शन. नाउ लेट्स यू टेक सम इंस्टेंसेस जहां पर हम दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं. Let's start with multiplication of a proper fraction like 1/8 here with with a mixed fraction 10 1/2. तो क्या कर रही हूँ मैं, जो इस mixed fraction है उसको मैं फर्स्ट रो में लिख देती हूँ. 10 और 1/2 को फर्स्ट रो में लिख देती हूँ. Since we are multiplying, I put this multiplication sign in this first row first column. Okay, इस टेबल का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू लिख देती हूँ. एंड देन द फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देती हूँ. ओके, सेकेंड मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. सेकेंड जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको मैं फर्स्ट रो में लिखती हूँ और जो फर्स्ट फ्रैक्शन दिया गया है उसे मैं फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ और मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ दे देती हूँ. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1/8 विथ 1/8 इंटू 10. हम ऐसे करेंगे. सो 1/8 इंटू 10 अगर करेंगे इट विल बी 5/4 क्योंकि कॉमन है 2. 2 5 10, 2 4 8. सो ये हो गया 5/4 जैसे कि मैंने कहा. सो आई विल राइट 5/4 हियर. Now 1/8 into 1/2, there is nothing common. We can multiply the numerator with numerator and your denominator with denominator. It will become 1/16. So यहाँ we will write 1/16. Now we will add these two fractions up to get the final answer. 5/4 plus 1/16. So क्या होगा? 4 और 16 का अगर मैं LCM निकालूं, the LCM will be 16. Okay, like we have discussed many times before, if one number is a multiple of the other, like 16 is a multiple of 4, then their LCM, both of the numbers LCM will be this number which is the multiple 16. So 16 divided by 4 is 4. 4 we multiply करेंगे 5 के साथ, it will be 20. 16 divided by 16 is 1. 1 if we multiply with 1 it will be 1. So it is 21/16. Okay, or 21/16 को if we convert it into this mixed fraction, 16 ones are 16, 21 minus 16 is 5. So it will become 1 5/16. Okay, this is the first method. Second method में I convert it 10 1/2 into improper fraction, then it will be 21/2. So ये 1/8 into 21/2. This again here there is no common factor. तो 21 into 21 हो जाएगा 21 और 8 into 2 हो जाएगा 16. So we reach there 21/16. और अगर हम उसको चेंज करेंगे प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को, it will be 1 5/16. Okay, this is how we do
multiplication of a proper fraction and a mixed fraction using method 1 and method 2. Now let's multiply two mixed fractions here. So here क्या कर रही हूँ, जो सेकेंड है, सेकेंड फ्रैक्शन है उसको मैं जैसे पहले लिखा था फर्स्ट रो बना दिया है, और जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको मैं फर्स्ट कॉलम में लिख के इनटू साइन इधर दे दिया. नाउ वी विल मल्टीप्लाई. 6 4 आर 24. 6 इंटू 1/2 कितना आएगा? 6 इंटू 1/2 अगर करूंगी दैट विल बी 3 बिकॉज कैंसिल हो जाएगा. 2 1 2, 2 3 6, तो ये हो गया 3. सो यहाँ 24 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया. 1/4 भी है, 1/4 भी है. So 1/4 will multiply with 4. It will be 1, and 1/4 multiplied with 1/2 it will be 1/8. तो क्या आएगा? ये सारे नंबर्स हम एड अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 24 plus 3 plus 1 plus 1/8. So it will be 24 plus 3 is 27. 27 plus 1 is 28. So it is 28 1/8. ये हो गया आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर this question number where we are multiplying mixed fractions with method 1. Now let's go to method 2. Method 2 में पहले I will change both of these fractions into improper fractions. So 6 4s are 24. 24 plus 1 is 25. 25/4 बन गया. Second fraction 4 2s are 8. 8 plus 1 is 9. 9/2 बन गया. Now I multiply both the numerators. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगी 25 into 9 is 225 और नीचे डिनोमिनेटर 4 into 2 is 8. इट बिकम्स 225/8 और उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी into this fraction, mixed fraction, it will be 28 1/8. I hope I'm clear with this. If you have any doubts, please let me know in the comment section.